अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको इस सेशन में खुशामदीद कहता हूँ जिसमें हमारे साथ हमारे एरास्मस मुंडस के बहुत अच्छे स्कॉलर आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि मोहम्मद आदिल बेसिकली लाहौर से हैं और इन्होंने अपनी जो बैचलर्स की एजुकेशन है वो पीयू से हासिल की है। और ये बेसिकली फूड टेक्नोलॉजिस्ट रहे हैं वहाँ पे और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। और मज़ीद मैं इनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि यू ग्रेड का जो प्रोग्राम है ये उसके थ्रू टेक्सास भी हुए हैं एक बार। और वहाँ पर भी ये डीन्स लिस्ट स्कॉलर में एक एमिनेंट स्कॉलर थे। इसके अलावा इन्होंने थाईलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी विन की थी और अब करंटली एरास्मस मुंदस सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स इंजीनियरिंग में एज एरास्मस स्कॉलर ये मज़ीद तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं कि क्या वो टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि एरास्मस मुंदस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए नेसेसरी हैं। तो मैं खुशामदीद कहूँगा मोहम्मद आदिल। कौन? जी, थैंक यू सो मच हमजा। पहले तो मुझे ये बताएं कि आवाज आ रही है मेरी, एम आई ऑडिबल? जी, यू आर परफेक्टली ऑडिबल, यू कैन गो ऑन। जी, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। हमजा भाई ने इंट्रोडक्शन मेरा करवा दिया और अ, बिल्कुल ठीक करवाया और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी बात जो कि मैं खुद बताना चाहूँगा वो ये है कि इरेस्मस मुंडस स्कॉलरशिप जो है वो हाईली स्पेसिफिक होती हैं, बट इसका एग्जैक्टली पर्पस ये नहीं होता कि आप जिस फील्ड से हैं आपने उसी फील्ड में ही एडमिशन लेना है। बहुत सारे लोग, मैं सेशन के स्टार्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा सा एक माइंड थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए कि इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन फील्ड यूर, ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन बिल्कुल उसी फील्ड में ही होगा। यू कैन डाइवर्ट इट अ लिटिल बिट अपने इंटरेस्ट और फोकस को देखते हुए और स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं आई आई गॉट एडमिटेड इन फूड साइंसेज एट पंजाब यूनिवर्सिटी और मैंने जो एक्सचेंज प्रोग्राम किया था वो न्यूट्रिशन में किया था। दैट्स समवट डिफरेंट फ्रॉम फूड साइंस, यूएसए में, टेक्सास में। एंड नाउ अब आई एम सस्टेनेबिलिटी इंजीनियर इन फूड डिपार्टमेंट। जो मेरा यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम है, एमएससी सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इट्स मोर ऑफ इंजीनियरिंग देन फूड साइंस। तो बट आई स्टिल गॉट एडमिटेड। और क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, मैं मिसाल देना चाहूँगा, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनको आ जाकर सिर्फ एक प्रोग्राम ही नज़र आता है, ब्रीडिंग का या एम्प्लांट का। बट देर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रोग्राम्स जहाँ पे आप लोग अपने आप की एप्लीकेशन आप सबमिट करवा सकते हैं और उसमें फिर आप यू कैन गेट सिलेक्टेड एज वेल इफ यू हैव अ रेलिवेंट एप्लीकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और आज का जो सेशन है बेसिकली इट वुड बी फोकस मेनली ऑन द ट्रिक्स एंड टिप्स कि कैसे एक रेलिवेंट और एक अच्छी एप्लीकेशन बनाई जाती है। रादर देन डिस्कसिंग द होल प्रोसीजर, वो होल प्रोसीजर आप बाद में भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। स्कॉलरशिप्स जो ग्रुप्स हैं वहां से भी आपको मिल जाएगा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, डेट्स वगैरह। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। जस्ट एलओएम राइटिंग, लेटर ऑफ मोटिवेशन राइटिंग की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, सीवी की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो उधर से स्टार्ट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हमजा, कैन आई शेयर माई अ, स्क्रीन? आदिल भैया आप ना यस ये यस श्योर, यू कैन शेयर। आपको अलाउ किया यूनिवर्सिटी हुआ है, वैसे सबको अलाउ ओके, किया हुआ परफेक्ट। ये इरास्मस मुद्दत स्कॉलरशिप होती कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके बारे में पहले बताएं। डॉक्यूमेंट्स है। एक्सक्यूज एंड मी, एक्सक्यूज मी, ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं प्लीज वेट कीजिए। एट द एंड हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और आप उसमें अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ लीजिएगा। अभी उनकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई तो आपने स्टार्ट कर दिया। प्लीज थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए। Erasmus Mundus scholarship basically it's a 2 years program and specifically focusing on the mobility, which means that you will study each semester at a different university or at least 2 semesters at one university, and then you will have to go to the other universities. These are the Erasmus programs. Then there's another category which is Erasmus Plus programs. Erasmus Plus programs basically have to have three countries involved throughout their education. I'm right now I'm in Erasmus Plus programs, which means that I have to take
each semester in a different country. So that's the basic difference between Erasmus and Erasmus Plus. In Erasmus programs, there are two countries that are involved, and in Erasmus Plus programs, there are more than two countries that are involved in the process. And in Erasmus programs, you can go on self-funding and you can win scholarship too. It totally depends on the availability of seats and the scholarship. And in the first year of the program, you get like €1,000 stipend, and some programs have €1,400 per month stipend, and then you get some mobility grants, like move-in grants, like 3,000 to €400,000 per month. Sorry, So आपकी screen share नहीं हो रही. I've not shared yet. Okay, then that's cool. And there are almost 185 Erasmus programs that are from all of the fields actually, and you can find the program that's relevant to you among these. It actually accompanies all the programs like arts programs from science, physics, engineering, food technology, medical, pharmacology, drug, and everything. As I'm a food technologist, I will try to cover the Erasmus programs related to food sciences, but all the methods that I will show here are not only applicable to food, but all the programs. So basically, जो tips and tricks हैं LOM की वो same ही होंगी, and you just have to follow the tips and tricks for your own scholarship program. So here are a few notes I wrote just yesterday that how your LOM should look like. So first of all, if you go to the website of your program where you want to apply, there are some requirements just mentioned there. Some programs say that the letter of motivation should be of 1 page, and some says that it should be of 1.5 page, and then there are some programs who doesn't even mention any requirement. So the programs who doesn't even mention any requirement, you are free to write the motivation letter of your own length, whatever you want. You can write even 3 pages or 4 pages, but it's always a good idea to write it in 1 page. So the information should be to the point and be clear and concise. And actually, as letter of motivation is actually a letter, so it should address someone. You cannot start writing by yourself, talking about yourself without addressing someone. For example, if I'm writing to a consortium, I would say, I would address the consortium in that letter, and I would write the letter, the address of that consortium. If I'm writing a letter to someone, I would mention his or her name. So that's how you start. Then first of all, you should talk about yourself, and then keep going this like talk about your present, what are you currently doing, and how the program is relevant to you, what made you select this program, why you want to apply to this program. And then you can talk about your motivation. What motivation basically starts from your short-term goals and long-term goals, and why you selected this program, and how this program will support your long-term goals, and how this program will support your short-term goals. So first of all, you should be mindful of what are your short-term goals and what are your mindful goals, what are your long-term goals, and then you can relate it to the motivation letter. And then you're also supposed to make a specialization. I will actually give you a live demo of how to write a motivation letter. So you can take the screenshot here, because I'm not going to discuss here. I will repeat each step when I'm giving you the live demo. Okay, first of all, to find the program, you have to go to the Erasmus catalog. You can simply write Erasmus catalog on Google. Then you just have to type the keyword. For example, we can discuss about food. So I will just type the keyword food and search it. And here all the programs that are available and are related to food sciences will be there, like membrane engineering for sustainable development,
sustainability in agriculture, food production, masters in sustainability, sustainable food systems engineering, food identity, and food innovation and product design, agricultural, food and environmental policy. So we would take the example of this program. We will just open the website of this program, and here you can find everything about this program. So to write a good motivation letter, to write a like make a relevant application, you should actually study the website first. So, starting from first portion to all the portion of the website, study each and every information that's mentioned on the website. What is FIPDAS? Why choose FIPDAS? Impact and outreach, contact. Then FIPDAS courses. What are the courses included? What subjects would they teach you? What is the mobility? Which countries are involved? What are the industrial partners? How to write the application? What is the career prospects, and what do the alumni do? Where are they serving right now? What are the what is the scope after graduation? What are the partners? So you need to study the whole website, and then start making notes about the information. For example, if I open what is FIPDAS, I would find a lot of information here about like FIPDAS is 65 high quality teachers. The universities that are involved here are mentioned also. Then if I go to why choose FIPDAS, you can find a lot of information here as well. So choosing FIPDAS, it's a unique opportunity to be able to successfully integrate, to undertake front-running applied projects, to deepen. So basically, these are the points that if you study the website, you can relate your short-term and long-term goals to their goals. So these are the benefit that FIPDAS promises. So you can relate your goals to this program. And then the what do the students will do after the program? It's also mentioned there. So if your goal is to serve the multinational industries in the long term, so the program will incorporate you with all the skills that are required to serve a multinational company or a higher level or at a research level. So I made some notes out of this website. Let me show you. So when I studied this website, whole website, I just copied some of the points that were actually mentioned in the website. For example, when it comes to the selection of the students, they mentioned that the student should be high achiever academically. I made a note. The student should have team management skill, leadership skills, and English communication skills. I made a note. I wrote them down. The students should have problem solving capacity, critical thinking capacity, IQ, EQ. So these are all the notes that I just copied from their website. Now I will show you how to incorporate these notes in the letter of motivation to make your application relevant. So this is how a motivation letter should look like. First of all, I said that the letter should address someone, and then I mentioned. So first of all, I introduced myself that I'm a applicant. I mentioned my address. Then I addressed the secretary of FIPDAS. I also mentioned the address, and then I just started discussing about myself. And here I will compare the keywords that I copied from the website here. So they've mentioned that the student should be high achiever academically, should have team management skill, leadership skills, high IQ, EQ. And I exactly mentioned these skills in my application. Here I mentioned my strong communication skills, sharp IQ, EQ, leadership potential, teamwork qualities. And then I mentioned my academic excellence. I discussed about, let me show you something. They mentioned that they wish to gain experience of an international research work on innovative functional foods. So I mentioned these
these tips too in my letter of motivation, that I'm also wishing to gain international education like this. So you just need to follow the information that's actually mentioned in the website and then write a letter of motivation according to that. There are like three components in writing a letter of motivation. First of all, who are you? What's your past? So you should adjust your past according to the website, like what candidates they are looking for. So you just need to write the applicant, the factors that make you relevant to the program. For example, if they have mentioned that you should be an high achiever academically, you can mention something related to your academic performance. If even if you are not a high performer in your education, you can actually discuss about something, like even if you have some good marks in one or two subjects, you can discuss about those. For example, if they're related to food, you can talk, I got A plus or A plus in one of the subjects related to food and something like that, just to make your application relevant. And then they also want some people from team management skills, so you can quote some examples from your bachelor's or maybe your past, that you're good at team management. If you have led a team during any project in your bachelor's, like if you have been a group leader in presentation, in assignment, if you have been a CR of the class or anything related to team management, you can discuss about that. And leadership would go for the same. For English communication, you can quote some example about any of your like past that shows that you have good English communication skills. And then you start looking for what kind of students they are looking for, like what qualities a student should have. You can find in this website what kind of applications they are looking for. If you go in the application procedures, there must be something that they would have mentioned about that candidate that they're looking for. Let me find out. Hmm. Mostly it's mentioned in the requirement section that what kind of applicants they are looking for and what should be the qualities that should be in the student. And then you just need to talk about the qualities that they want. In different Erasmus programs, they want different qualities. So you just need to study the website first and then make your application relevant. Also, you cannot submit same letter of motivation to every program. You need to modify the letter of motivation according to each program. For example, if I talk about food innovation and product design programs with this, they mainly focus on the functional foods and packaging development. If I talk about the program right now where I'm enrolled, sustainable food systems engineering, they mainly focus on the engineering and computational perspective. So I had to write a new letter that basically encompasses computational and engineering perspective. My goals should be different. My background should be related to that. For example, in computational food systems engineering, I talked about only the courses that were related to somewhere engineering and somewhere about the softwares that are used in the engineering. And in this product development, you will not find anything related to engineering and software, because this program is totally different. It basically focuses on the functional food and product development, and that's what I have discussed in this letter of motivation. Also, I forgot to mention that I was also selected in this program. I was actually shortlisted in food innovation and product design and food systems engineering, and then I opted the second one. So also there some of the keywords that are mentioned here, that we should focus on the leadership goals, social perspective, intellectual skills in multidisciplinary context. And that's again I have mentioned here in my application. So more or less the things that make your application outstanding application is the relevancy. And for relevancy, you have to just discuss, first read the website and then draw everything that's mentioned in the website to your what do you say in your LOM.
Also, in the second portion of letter of motivation, like in the third or maybe fourth paragraph, you have to discuss the mobility track of your website, of your program. Like in the fifth, they said that the first semester would be in France and the second semester would be in Ireland. And then you have to do some summer school and summer internship, and then you have to choose a specialization. And the specialization would be in one of three universities. One is Unina, Italy, and the other one is France, Paris. And then you are actually supposed to talk about which specialization you want to opt in your second semester. The one in the Unina Italy would be focused on healthy food design. The one in the France would be focused on food design and engineering, and the other one is would be focused on food packaging design and logistics. So then you need to discuss about the mobility. For example, you have to talk about the specialization you want to take in your letter of motivation. For example, I wrote about the food packaging design and logistics in second year, and then I talked about why I want to choose this specialization. What are the things that like draw my interest to this specialization, and how I can, if I get enrolled in these programs, how I would make myself a successful candidate. And then at the last, you need to conclude your motivation letter again. You just need to discuss all of this stuff here again, and then draw it back to your long-term and short-term goals. One thing also that's worth mentioning is that you cannot you have to adjust your goals according to the program's goals as well. For example, if the program wants their students, the graduates, to serve in the multinational companies in the international perspective, then you cannot say that I will return back to my country after my education. So that would draw a difference between their goals and your goals. Uh, if they want their students to be in the R&D department to do researches after your graduation, you cannot say that I would want to be in a like a business field and stuff. So that's basically they select the students that have the maximum relevance to their program. So if I write that I want to be a businessman after graduation, for example, I want to establish my own food industry, I might not be a good candidate for them, because they want the candidates to be in the research field, or maybe in the R&D department, or maybe serving in on an international perspective. So I am supposed to say that I want to serve in the R&D department in the on the multinational companies after my graduation, so that I make myself a relevant candidate. And if I say that I want to return to my country after graduation, and some people actually write that, so that draws a difference between their goals and my goals. So in that case, I would not be a perfect candidate for them. So they will start looking for people who have mentioned that uh, the candidates who have mentioned that they want to serve internationally instead of just returning back to their country. So this is also the thing that we need to discuss. First of all, I talked about the past. So you should make your past relevant. For example, if I want to apply in an engineering program after being graduated from a food science program, I would discuss about the subjects that I had in my bachelor's that are relevant to engineering program, so that I make myself a relevant candidate. And if I'm applying to this program, FIPDAS, they basically just discuss about the food development and product development, then I cannot talk about my past related to engineering. I would just talk about the past that is relevant to this program. I would talk about the courses, the subjects that I had in my bachelor that are relevant to this program, the food innovation program. And then the second factor that they see in your letter of motivation is the skills that you have. And if you study the website, you will find out they have mentioned a lot of skills that they are looking for in the candidate. For example, team management skill, leadership skill, and international exposure. You cannot say that I would have a cultural shock when I move out, but instead you can show your interest in the international education. If they mentioned that they're looking for people who are interested in international education, you can show that you're interested to meet new people, you're interested to learn new culture. That way you're making sure that you will not have a cultural exposure if you get selected. For example, some people can experience culture shock. Some people can become sick when they move out of their country. Some people they don't perform academically well because they miss their culture, they miss their food, they miss their people. So they also try to make sure that the candidates they are selecting are actually suitable for international education.
These are the people who can perform well even staying outside and moving in different countries, new cultures, and they are very good in adopting new culture. So if in my letter of motivation, if I mention that I am quite good in adopting new cultures, in learning new skills, and I'm quite good in trying new foods, always looking for new food. So in that way, I'm giving them a hint that I am suitable as an international candidate. So that's also a point that they want. And if you mention the leadership skills, teamwork skills, that actually they are looking for, you're actually making yourself relevant to their program. If I say that I am more of a team worker than a team leader, then there would be a difference between my qualities and the qualities they are looking for. And the third and the major aspect that they look in a candidate is their long-term and short-term goals. If my short-term goal is to develop some products, and if I'm from an engineering field, I would be more concerned about sustainability and going towards the sustainable procedures. So these could be my short-term goals, and these goals should also be relevant to the program. And then it comes to the long-term goals that I already explained, that if they want the long-term goals of the candidate to be a like to serve in a multinational company as an R&D, you cannot say that you want to return to your country or maybe start your own business. But if they say in their application that they encourage students and they want their students to have an entrepreneur career, then if you say that you want to be a businessman, then you're actually a right candidate. So everything is just focuses on the relevancy. If you want to get selected, you just need to make yourself a relevant candidate. Discuss about the things they're looking for, discuss about the goals they're looking for, discuss about the skills that they want in the candidates. And if you have any the question, you can ask about after the session, and now we can discuss about the CV. One thing that I would like to discuss is there's always a there is always a difference in the methods of writing a CV. And in Erasmus programs, they basically encourage the format that's a Europass format. If you write your CV in a Europass format, that's what everyone recommends. But I don't like the format, the Europass format. So when I wrote my CV, I just made my CV and I didn't find it very good. So I just edited it a bit. I converted it into the Word format and then highlighted the things that I wanted. So I just actually changed the format. So it follows all the principles that should be in a Europass CV, but it's not actually a Europass CV. It discusses about me, my education, my certifications, my volunteer work, my career goals, and everything. But the format is different because I find that the format that's in the Europa CV is a little bit different and misleading. Misleading in the sense that maybe I can show you an example of the CV from the Europas. If you view this CV, this is the Europass CV, and it actually every information is mixed up in this CV. That is not so much attractive and not so much like if I would the application reviewer, I would not find it interesting. So it really doesn't make myself interesting, my CV to read till end. But if you view this CV, it looks quite good, and everything is highlighted, like the use of different colors and highlighting and changing font size. It basically makes your CV attractive, and when your CV is attractive, the reviewer would find it interesting to read your CV till end. And there's one more thing that's different from in my CV than the regular CVs is that the length of my CV is 8 pages, not 2 pages. Everyone recommends that the CV should be of 2 pages or 3 pages and not more than that. They're actually true. The CV should be only 2 or 3 pages, but it can be more than that if your CV is relevant.
again, I would say that the relevancy is the key. If my CV is relevant to the program, if I'm applying, and it actually looks good and it's attractive, then if even if it's 8 pages, it would get selected. I applied in 3 programs last year, and I got shortlisted in all 3 of them. And then I was finalized as a final candidate. I got offer in 2 programs. So the fact is, if this CV of 8 pages can get selected in 3 programs, can get shortlisted in this program, there's then one thing is clear, that if your CV is relevant, then the page limit doesn't really matter. So if you read about my CV, first of all, I have discussed about myself, then my education, then certification, then training. Another difference from Europa's CV and this CV is that, let me show you the other one. You should also consider the fact that when you're applying for an educational program or maybe a scholarship or a master's program, the CV should not start from work experience. No one is interested to know about your work experience when you're applying for an academic program. They just want to know your academic background first. So if you try to make your CV on Europass and don't edit it, you will find that it's a little bit different. Uh, when you apply for a job, it's always encouraged to write your work experience word. There is actually a format to write a CV, that is CAR. If you can Google it, CAR format, you will find out there are actually some methods to write a good CV. And the CV that's in the Europass, it's actually not so good because it starts from work experience. Sections are mixed, and if I would be a reviewer, if I'm interested to read the educational and trainings part, I would have to scroll down to the point and find out what information I am looking for. But instead, if you edit it simply like this, you just need to discuss about yourself in the about me section, and then straight you are starting from your education. That's what the educational programs are interested in. They want to know about your education and what were your learnings during your education first. And then they want to hear about your publications. If you have any publications, mention your publications after the education. Then you can discuss about the certifications you have. So first of all, the look, the attractiveness and the appearance of the text in the CV is very important. Second, the sections are very important, and the ordering of the section is very important. The order should be like, first of all should be the education, then publications, then certifications, and then if you have had any training, you can mention about the trainings. And then if you have had any online courses or MOOCs, you should mention the MOOCs, and then you can jump to the work experience section. And then after the work experience, there should be the volunteer section. But in the Europa CV, it starts from work experience, then it goes to volunteering, then it goes to certification, and at the end you will find the education and training section. That's all actually mixed. Education and training should not be in one section. So I would advise every one of you to make a CV in Europass format and then convert it to the Word format, and then start editing it. Make it look better. Make it highlight the things that you want to highlight, that you want the reader to read first. Then my CV is 8 pages and every information is relevant. If you are writing 2 pages of CV and the CV doesn't have any relevant information, it's actually not a good one. But if you are having a CV with maybe 10 pages and it actually has all the relevant information, it might stand out among all the other CVs with 2 pages. So don't mention the information that's not relevant. Don't mention the information that they don't want to know about you. Always mention the information that they would be interested to know. And you can find out what they want to know just by discussing and reading the website. So if I read the program's website that I want to apply, I would know that they would be interested to know about my education, first of all, not my work experience. They would be least interested to know about my work experience. So first of all, they're interested to know about my education. Second, what I learned in my education. Mostly people, they just mention the education and don't discuss what were their achievements or what they learned in your education, in during their education. And then you don't mention the subjects. Some people also mention the list of subjects they had in the bachelor. Don't do that. They can find your subjects from your transcript. So you don't need to mention the subjects in the education section in your CV.
and then they would be interested to know about your online learnings and certifications and trainings. If you have had any trainings and certifications, you should mention that. Trainings are basically internships and online courses, or maybe could be anything like physical or online training, could be anything related to your field. It should be related to your field and it should not be relevant. Then you can discuss about the online courses you have had. And I would suggest everyone, if you have like 1 month before the deadline, you should actually open the website, study the subjects that they would teach in the master's program, and then start learning online about these subjects before submitting your application. For example, what I did was, these are just the clever tricks that make your application good. I opened the website, this one, food innovation and product design, because I wanted to apply in that. And I simply opened the course content, and then first what they would teach in first year and what they would teach in second year. I just opened it, and I found the courses, the subjects that they would teach in each subject in each semester. Then started learning about those subjects. Like I had online courses related to those subjects. For example, they had a course in not to not cooking. It was a complete subject that they had to teach in master's program. I did an online course related to that program. And then I mentioned in my application that I'm interested in culinary course. I mentioned that course in my CV as well, that I already did this course. Then there was a subject related to product development. I did 3 courses related to product development online, and I mentioned in my CV. And that way, the only difference that it creates is that they find out that you know most of the course curriculum already, so you would perform better than the other candidates. If I know about not to not cooking, and I have already done some online courses related to not to not cooking, I would be a better candidate. But I would be a better candidate than the other ones, because I already know about not to not cooking. And when they will, if they select me and I got enrolled, I would actually perform better than the other candidates. And there are chances that I would be a successful candidate in the end, leading to the long term goals. So it actually increases your chance if you just go to the website, find out the courses they would teach, and then you do those courses beforehand and mention your online courses in your CV. And then they're not very much interested in volunteer work. So don't mess up with the volunteer works. You're not supposed to mention each and every volunteer work. Just mention 2 or 3 volunteer works if they are necessary, and try to mention the volunteer works that include teamwork and leadership skills. I would not have mentioned any volunteer work in my website because that's not relevant. But I mentioned only those that had the teamwork and leadership potential. I mentioned those volunteer works because I had done a tree plantation. I actually grew 1,500 trees, and I had a team, and I led that team, and then we started a plantation drive in 2020. I mentioned that volunteer work because it shows my leadership potential and my teamwork skills. So mention only the things that are relevant in your CV. Don't mention the things that are not relevant. And then it's also necessary to mention your soft skills. If you can find out and you can figure out the softwares that they would work during the master's program, then you should start learning about those softwares and mention those skills, soft skills or softwares in your CV. For example, more or less every Erasmus program works on RStudio, MATLAB, and some programs also include the statistical softwares that are used. So if you know a little bit about them, you can mention them in your CV. It's important. And if you don't know anything about that software, then you should watch some videos, maybe on YouTube, get some information, get to know that software a little bit. And then you can mention that in your CV that you know a little bit about this software. It would also make your application relevant, because they already know that you are not a beginner. You know a little bit about the software that they will start working on in the master's program. Then it comes to the reference letters, and that's it. In reference letter, you should also focus on the relevancy. You can, maybe if you want to get reference letter from your professor, you can discuss with him the skills that you want, then that you want to emphasize. For example, I got a reference from my professor
discussed about a good idea to mention some skills that are relevant to the product development. So my referee, he got an idea about how he should write the reference letter, relevant reference letter. So he mentioned some of the skills that I had related to product development. And when I wanted a reference letter for the other program, the engineering program, I just went to him and I let him know that the program is relevant to engineering, computational statistics, and AI softwares. So then my referee, he just discussed about the skills that were related to computer and engineering and statisticals. So that's how you make your application relevant. You can always discuss with your professors or maybe your referees if you're getting a reference letter from your professors, or even if you're getting a reference letter from your employer. You can always discuss with him that these are the things that they need to consider before writing the reference letter. Otherwise, people who refer you, who write a reference letter for you, they would just simply say that he has been a good student, he has been a brilliant student. They won't discuss a specific skill about you. So you can actually discuss with them and ask them to if they can discuss some of the skills related to that program. In that way, you would have a better reference letter and you can get maximum scores out of your reference letter as well. So these three are the things that make your application relevant: letter of motivation, CV, and then the reference letters. And if you can follow all the tips and tricks that I mentioned, I will just summarize them again, and then your selection chances are higher. And also, I would like to mention that having a higher CGPA would not make your application a successful application. Some people think that they have a very high CGPA, they have been a gold medalist, so they can be selected, but they would not never be get selected if their application is not relevant. So a person with a relevant application, even with a low CGPA, would be selected, and the person with higher CGPA, a lot of publications would not be get selected. I had no publication. I just had some relevancy in my letter of motivations, in my CV, in my reference letter, by following all the tricks and tips that I just discussed. So I got selected, and my colleagues who had three publications, they were not selected because they were so much focused on their CGPA and the publications that I have publications, so I would get selected, and that they missed out the relevancy term. Basically, they are not interested to know about your CGPA or maybe your publications. They actually make a difference if they are relevant. Relevance is like if you can prove that you are a relevant candidate, you have a relevant CV, you have a relevant motivation letter, you have relevant future goals, and you have a relevant past, they will select you even if you have a low CGPA. And they will reject the people who have a lot of research works, publications, and CGPA. And they can actually select those people with the research work if their research work is relevant. If it's not relevant, they will not select it. So everything just like it's goes around relevancy. The main thing is relevancy. That's it. And I guess now you guys can ask me questions if you have any. And if you want me to summarize everything again, I can summarize again. Hamza, can you hear me? Yes, Adil, you explained very well, and I will just suggest the participants to raise their hands one by one, so that I will just call the name of the participant and he will ask his or her question. Okay? Yeah, fine. You can maybe read the chat section and read the questions for me so I can just go through All them. right. So, first of all, I will call Abrar. Ibrar, please unmute yourself and ask the question. Meanwhile, I will go to the inbox. Assalamualaikum. Hope you are fine. I just want to ask which platform is best for online courses? Every platform is best. Basically, you don't need to provide a proof of your online course. They don't require you to submit a certification. So even if you can get some free courses that like even if they don't provide a certificate, but the content is good, you can go there. For example, Coursera and Udemy, they have some very good courses
for free, but they don't provide certification. And then they have some courses that are expensive and that are paid, and but they provide a certificate. So I would suggest you to do the free ones and with a good learning, even if they don't provide a certificate. So you just have to learn something about the program. And also I would suggest to mention only those programs that you actually know about. That if you have an interview, you would have to, they may ask you questions related to that terms that you have already mentioned in your application. Then you would have to prove that you what you wrote was a truth, not a lie. You can do courses from Coursera, edX, maybe on YouTube as well. You just have to get some information about that program, get to know about the subjects. That's it. Is that clear? Yes, thank you so much. Then I would like to ask, मैं एक यूनिवर्सिटी में एज लैब असिस्टेंट जॉब कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकता हूँ? Yes, you can. Just make sure that recommendation letter is relevant. You can get recommendation letter from your employer, from your lab supervisor, from your university, from your professors, and it would be acceptable. But just make sure that to discuss with the supervisor first, like discuss about the program you want to apply and what skills there, so he can focus on the specific skills that can make your reference letter a little bit relevant. Okay, thank you so much. All right, next, Hassan Khan. Please unmute yourself and ask your question. ओके सर, होप यू विल बी फाइन सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो है ना इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, और अभी जो है ना मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। डिग्री जो है ना मेरा जो है ना वो जनवरी में आएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर अभी जो है ना मैं एलिजिबल हूँ इसके लिए, एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के लिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं जो है ना वो कौन से ऐसे जो है ना वो एक शॉर्ट कोर्स करूँ जिससे जो है ना मेरा मतलब प्रोफाइल जो है ना वो बढ़ जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो जो प्रोग्राम्स जिन पे आपने अप्लाई करना है, इरास्मस कैटलॉग पर जाएं और वो कोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लें जिन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। उन प्रोग्राम्स की वेबसाइट ओपन करें और देखें कि वो कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे, वही सब्जेक्ट्स अपने एज एन ऑनलाइन कोर्स करने हैं। उनका कोर्स करिकुलम ओपन करें, कोर्स कंटेंट ओपन करें, और फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, देन सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो वो पढ़ाएंगे, उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन कोर्सेज कर लें। जैसे मैंने मिसाल दी कि नॉट टू नॉट कुकिंग का सब्जेक्ट मेरे प्रोग्राम में था, मैंने उसका ऑनलाइन कोर्स करके सीवी में मेंशन कर दिया। दैट्स इट। All right, next, Rabia Irshad. Please unmute yourself. Assalamu alaikum. As you have talked about letter of motivation, so I just want to ask something about that. Like in some courses, they don't ask you to write a page of it or something like that. They do ask some kind of questions, like one, two, or three question about that, like uh, why do you choose that program, how this program is gonna impact your life, and how this program is gonna impact on your country. And you have mentioned we are gonna address somebody there, like we are at a letter. Am I gonna address in that questions, that am I gonna address somebody while answering that questions, or am I gonna write it like as a whole, like No, I'm asking a question? you don't need to address somebody. Actually, the programs that have a set of questions to ask instead of just writing a letter of motivation, these are actually the easy programs. You can write a lot, and you just need to ask the questions that they do. But what I discussed was about the programs that don't mention the set of questions that they want to know. So I just discussed about the questions जो कि वो लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसको फोकस किया कि ये चीजें आपको सुननी है। बट अगर आपके प्रोग्राम ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि उनको ये क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, तो ये तो काम आसान हो जाएगा आपके लिए। यू जस्ट नीड टू फोकस कि मैंने इस सवाल का जवाब कैसे देना है। दैट्स इट। यू डोंट नीड टू एड्रेस एनीबॉडी। अगर उन्होंने ये पूछा है कि आप सिलेक्शन प्रोग्राम को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन। दैट्स इट। इसमें ये पेज लिमिट नहीं है, इसमें ये ऑर्डर नहीं है कि पहले पास्ट डिस्कस करना है, पहले फ्यूचर डिस्कस करना है, या पहले लॉन्ग टर्म गोल्स डिस्कस करने हैं। तो ये तो लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखने से ज्यादा आसान हो जाता है एक्चुअली काम।
Just answer the question without addressing anybody. All right. Next, Abdul Rahman. आप प्रश्न पूछ सकते हैं. सर रिसेंटली मैंने अपनी जो है अटाल खान यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए हुई है. आपका Now I wanted to apply for MPhil program in biotechnology. Excuse me, Abdul Rahman, हम आपको So समझ पा is रहे हैं. आप there kindly any chat में लिख दीजिए. CGPA is leadership and studying? I need to can apply. So my question is, am I audible? अब्दुलरहमान दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज कट रही थी बहुत ज्यादा. दोबारा रिपीट कीजिएगा. Sir, actually, recently I have completed my bachelor's and started a job at AKU. So now I also wanted to apply for this scholarship. So is there any CGPA range that we need for this scholarship program, or just we need to have a certain experience or relevancy to the program, अगर like अगर आप अपने somebody has प्रोग्राम की done? अगर आप अपने प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां देखेंगे रिक्वायरमेंट्स के अंदर अगर उन्होंने कोई सीजीपीए मेंशन किया तो देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट. अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं की तब कोई लिमिट नहीं है. बट Okay, एक जनरल जो ओवरव्यू है, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनका सीजीपीए 3.4 और 3.5 से ज्यादा होता है okay. जनरली. And okay. The second thing is that I wanted to ask you, is there any IELTS test we need to give for that particular scholarship as well, or not? Is that mandatory? ये भी डिपेंड करता है ये भी डिपेंड करता है कि जिस प्रोग्राम पे आप अप्लाई कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट में अगर मेंशन है कि आप आईएलटीएस रिक्वायर्ड है तो फिर आपको Okay. देना पड़ेगा. और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं. प्रोफिशिएंसी लेटर आपको Okay. आपके डिपार्टमेंट से मिल जाता है कि आपकी डिग्री जो बैचलर्स की है वो इंग्लिश में थी, डेट से, तो वो भी चल जाता है Yes. अगर अगर आपके Yeah. प्रोग्राम ने मेंशन किया हुआ तो. Okay. Thank you. I got it. Thank you. Next, Saira Saeed, आप प्रश्न पूछ सकती हैं. Assalamualaikum. I have been recently in contact with some of the master student in environment and sustainability. Actually, it is my field, and I have been myself exploring. So some of the programs were looking for some hands-on softwares. Actually, in my graduation, I have just studied one course on software, and that was not much updated. I learned nothing from it. So how to overcome this? And I was exploring online software courses, but there are not much, and most of the courses in field of environment are not free in Pakistan. एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपने जो जो सॉफ्टवेयर हैं वो आपने बैचलर्स में करने हैं. आपको सिर्फ उनका एक्सपीरियंस तो आपको ऑनलाइन मिल जाता है. यूट्यूब इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी. यूट्यूब से आपको सारा कुछ मिल जाता है. मैंने अपने बैचलर्स में हमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं सिखाए गए थे, लेकिन ड्यूरिंग माई बैचलर्स मैंने खुद यूट्यूब से और ऑनलाइन काफी सारे प्लेटफॉर्म से इन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया था, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिया था. तो आप अगर ज्यादा नहीं सीख सकते तो जस्ट नो हाउ कि सॉफ्टवेयर क्या है, कौन कौन सी चीजों को ये सॉल्व करता है, किस किस पर्पस के लिए यूज होता है, जस्ट इतनी आप लर्निंग कर लें तो इट वुड बी इनफ. यू कैन जस्ट मेंशन दैट यू आर अ बिगिनर इन दैट सॉफ्टवेयर. और अगर आपको यूज करना आ जाए तो ये तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा. यू वुड बी इंटरमीडिएट. असल में होता ये है कि जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होते हैं दे आर टू मच एक्सपेंसिव, और एज अ स्टूडेंट आपको उनकी एक्सेस नहीं मिलती. आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं पे कर पाएंगे, और इसीलिए वो सॉफ्टवेयर सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही परचेज करते हैं और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एक्सेस देती हैं. तो अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल मैटलैब इज अ वेरी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर, एज अ स्टूडेंट मैं उसको उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं ले सकता, लेकिन आई कैन एक्चुअली मेंशन कि मुझे इसका नो हाउ पता है, ये सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट कैन वी गेट आउट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. तो इसका मतलब मुझे नो हाउ है, बट मुझे अगर ये इसका लाइसेंस मिल जाए इन ड्यूरिंग माई मास्टर सो आई कुड परफॉर्म बेटर. तो अगर आपके पास कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर मेंशन है जो कि एक्सपेंसिव है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें यूट्यूब से कहीं से भी कि ये क्यों यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, और उसके बारे में आप डिस्कस कर लें अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में या सीवी के अंदर, तो इट वुड बी इनफ. Next, Hamza Aziz, you can ask. अस्सलाम वालेकुम. Welcome. वैसे मेरा आपसे सवाल ये था, एम आई ऑडिबल? या You are audible. तो
सवाल ये था आपसे कि अभी ना मैं फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ नॉर्थ गैजेन यूनिवर्सिटी में, कंप्यूटर BS कंप्यूटर साइंस में। और मेरे पास कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी पड़े हुए हैं सोलर नाम की वेबसाइट से, मेरी फील्ड से रिलेटेड ही, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही। कुछ यूट्यूब से भी कोर्सेज किए हुए हैं, और CGPA भी मेरा ना अभी 3.9 जा रहा है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब तक लेट्स से मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, कहीं मेरे 3 सेमेस्टर पड़े हैं, तो मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपनी प्रोफाइल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 6 सेमेस्टर्स का रिजल्ट है, इफ यू हैव द रिजल्ट ऑफ 6 सेमेस्टर्स, यू आर एक्चुअली एलिजिबल टू अप्लाई, एंड देन यू कैन प्रोवाइड योर डिग्री लेटर ऑन। और अब क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे प्रोफाइल को बेटर बनाना है, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग। फॉर एग्जांपल, अब आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज होंगे, कुछ AI पे बेस्ड होंगे, और कुछ कंप्यूटर कोर्सेज का फोकस डीप लर्निंग और किसी और चीज के ऊपर होगा। तो अगर आप ने अपनी प्रोफाइल को बेटर बनाना है, तो जस्ट उस प्रोग्राम को ओपन करें, उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स, जो जो स्किल्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं दैट दे लुक फॉर इन अ यूनिवर्सिटी, वो सीखना शुरू कर दें। देन अगेन आई वुड सजेस्ट टू गो इन द सब्जेक्ट सेक्शन, और जो जो सॉफ्टवेयर और जो जो कंटेंट उन्होंने मेंशन किया, अगर उसके बारे में कुछ ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं तो वो कर लें। पास्ट में आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितनी भी आपके पास लर्निंग्स हैं, उनमें से जस्ट सॉर्ट आउट कर लें कि रेलिवेंट कौन सी है। अगर जो सर्टिफिकेट्स और जो लर्निंग आपकी रेलिवेंट है वो आप मेंशन ना करें तो बेहतर है। तो जो जो उनको चाहिए डाटा सिर्फ वो प्रोवाइड करें, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रोफाइल को सेट कर लें। अभी आपके पास टाइम है, एक प्रोग्राम पे आपने अप्लाई करना है, आप उसके लिए सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लें, और क्या क्या अभी आपको सीखना है उसकी लिस्ट बना के सीखना शुरू कर दें। ऑनलाइन सीखें, जैसे भी सीखें। और दूसरे प्रोग्राम पे जिस पे आपने अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या आपके पास ऑलरेडी नॉलेज और स्किल्स हैं, वो सॉर्ट आउट करके अलग कर लें, और जो जो आपको सीखना है उसकी लिस्ट बना के उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। दैट्स इट। जस्ट आपने अपनी प्रोफाइल को रेलिवेंट बनाना है अकॉर्डिंग टू दैट वेबसाइट। वेबसाइट ओपन करें और उसके अंदर ढूंढें कि आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए। क्लियर है? Next, Mariam जी जी, Yasrab. थैंक यू सो मच। You can. अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ना अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ, मतलब कि मेरी वर्किंग नहीं है, बस एज अ ट्रेनिंग इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो मुझे जो है ना वो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एम्प्लॉय सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है? जी। ये ना उन्होंने जिस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई करना है ना, उन्होंने मांगा हुआ है कि अगर आप वर्किंग कर रहे हो या इंस्टीट्यूशन में वर्किंग कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, तो वो आपको अपलोड करना है। तो मैं तो एज अ इंटर्नशिप, मतलब कि मेरी इंटर्नशिप है, मैं एज अ इंटर्नी काम कर रही हूँ। तो आप तो फिर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेंगे उनसे, या एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ले लें कि यू आर एनरोल्ड एज एन इंटर्नी इन दैट कंपनी। ओके। और जो एक दो पहले भी मैंने इंटर्नशिप की है, तो ये मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस में ऐड करूँ या ट्रेनिंग में ऐड करूँ, ये सीवी में? वर्क एक्सपीरियंस में आता है। थैंक यू सो मच। ये वेलकम। Next, हमारे पास हसनैन अनवर, आपका सही। अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपने डिस्कस किया था मोबिलिटी के बारे में सेमेस्टर्स की। हम्म। तो उन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तो पहले शेड्यूल किया होता है ना कि आपको ये यूनिवर्सिटी में फर्स्ट यहाँ पे पढ़ना है और सेकंड यहाँ पे पढ़ना है, थर्ड के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं और फोर्थ के लिए होते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें मोबिलिटी के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मेंशन करना इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन में या हमारे मोटिवेशन लेटर में? मेंशन आप कर सकते हैं अगर आपका कोई इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ कोर्सेज या कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके अंदर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आप तब डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं KU11 का स्टूडेंट हूँ राइट नाउ, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर मेरी यूनिवर्सिटी का KU11 में था। KU11 इज अमंग द टॉप 50 यूनिवर्सिटीज। तो मैंने अपने मोटिवेशन लेटर में एक्चुअली डिस्कस किया था कि मुझे जो इस प्रोग्राम में ज्यादा मेरा जो इंटरेस्ट ड्रा हो रहा है वो इस यूनिवर्सिटी की वजह से हो रहा है कि पहला सेमेस्टर इसका इस यूनिवर्सिटी में है। और उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स मैंने डिस्कस किए थे कि इस मोबिलिटी के अंदर मुझे ये सब्जेक्ट्स जो आप लोग पढ़ाएंगे, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट्स। तो आप जस्ट अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, थैंक यू। Next, सरोज चौधरी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरे एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं। आई डिड माय एमफिल इन बॉटनी। तो बॉटनी से रिलेटेड जो मेरी फील्ड है, इसमें मैं और कौन कौन सी फील्ड्स में अप्लाई कर सकती हूँ? और
दूसरा मुझे ये पूछना था कि आई गोट 6 बैंड इन माय आइट्स, तो ये जो है वो सफिशिएंट है या फिर नहीं सफिशिएंट, या मुझे दोबारा से इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा? और क्योंकि बॉटनी से रिलेटेड जो है वो उसमें मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि क्लियर जो है वो बॉटनी से रिलेटेड स्कॉलरशिप्स नहीं होते, या प्लांट साइंसेस में होते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं फूड से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उनमें अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? मैंने सेशन के बिल्कुल स्टार्ट में पहली बात जो की थी वो मैंने यही की थी कि आपने एग्जैक्टली अपने फील्ड के रिलेटेड कोर्सेज नहीं ढूंढने, वो शायद आपको मिले भी ना। बट अगर उससे रेलिवेंट कुछ मिल जाता है, रेलिवेंट का मतलब होता है जो मिलते जुलते होते हैं। अब बॉटनी के अंदर आप लोग वही सब कुछ प्लांट और प्लांट हेल्थ और प्लांट ब्रीडिंग समवेट रिलेटेड टू दैट आप लोग करते हैं। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के होते हैं, तो आप माइक्रोबायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड टू प्लांट्स है। और आप प्लांट हेल्थ, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस और इन सारी चीजों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिनका ताल्लुक घूम फिर के आके प्लांट्स के साथ होता है। तो एक्चुअली बॉटनी के अकॉर्डिंग ना सर्च करें, आप 185 प्रोग्राम्स की लिस्ट है उनको गो थ्रू करें और आपको काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जिसका 1 और 2 एस्पेक्ट जो है वो आपकी फील्ड से मैच होगा। मैं अगर अपने प्रोग्राम को डिस्कस करूं तो मेरे प्रोग्राम के अंदर एक पूरी वैरायटी है लोगों की। इंजीनियर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के लोग हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। तो जो सिलेक्शन होती है वो इंटरेस्ट और रेलिवेंसी की बेस पे होती है, वो आपके पास्ट की डिग्री के ऊपर नहीं होती। अगर आपकी डिग्री के अंदर 25% हिस्सा भी अगर आपकी डिग्री का उस प्रोग्राम से रेलिवेंट है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन माई कोर्स, अभी करंटली जो मेरी डिग्री है इट्स मेनली फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड इंजीनियरिंग। लेकिन मेरा जो पास्ट है वो एग्रीकल्चर और फूड साइंसेज से है, बट मेरा एग्रीकल्चर और फूड साइंसेज का एटलीस्ट 20 to 30% पार्ट इस प्रोग्राम से मैच हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम हियर, मैं सिलेक्टेड हूँ। सो एग्जैक्टली बॉटनी के नेम से सर्च नहीं करें। रेलिवेंट सब्जेक्ट्स जो कि प्लांट हेल्थ से रिलेटेड है या प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड है, प्लांट कल्टीवेशन से रिलेटेड है, प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड है, प्लांट माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, आप उनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने क्या पूछा था, रिपीट कीजिएगा। सर मैंने पूछा था कि आइट्स में मेरा 6 बैंड है, तो ये यस, इनफ है या मुझे रिपीट करना पड़ेगा? आईएलटीएस के बेसिकली आपकी एप्लीकेशन के अंदर सारी चीजों के पॉइंट्स होते हैं, स्कोर होता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन का एक स्पेसिफिक स्कोर होता है, उसके बाद सीवी का एक होता है और एक आईएलटीएस का स्कोर होता है। आईएलटीएस का जो स्कोर है वो यहाँ पे एरास्मस प्रोग्राम्स के अंदर वो जस्ट एक लिमिटेड होता है, लिमिटेड इन द सेंस कि अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया है कि दे आईएलटीएस 6.0 और हायर, तो 6.0 इज द बाउंड्री लिमिट। और जिन कैंडिडेट्स का 6.0 आईएल्ट्स का स्कोर होगा उनको भी उतने मार्क्स मिलेंगे जितना 8.5 आईएल्ट्स बैंड वालों को मिलेंगे, बिकॉज इट्स जस्ट बाउंड्री, यू जस्ट नीड टू क्रॉस द बाउंड्री। अगर बाउंड्री उन्होंने लिखी है 6 तो यू आर एलिजिबल, आपको इक्वल पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर उन्होंने बाउंड्री ये मेंशन किया कि 6.5 या 7 उनको आईएल्ट्स चाहिए, देन यू नीड टू इम्प्रूव। अगर मेंशन ऑलराइट नहीं है, सर, थैंक यू। 6 मेंशन किया हुआ तो देन यू आर गुड टू गो, यू डोंट नीड टू इम्प्रूव इट। और सर अब वो जो आपने स्टार्ट में बताया था कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं स्टार्ट में, तो वहाँ पर मैं प्लांट से रिलेटेड कोई भी जो है वो ऐड कर लूँ? आप प्लांट से रिलेटेड ऐड कर लें, पैथोलॉजी से रिलेटेड ऐड कर लें, जस्ट मेक श्योर कि जो जो प्रोग्राम है वो आपकी बॉटनी से रेलिवेंट हो, प्लांट से रेलिवेंट जी हो। सर, थैंक यू देर आर सो मच, देर आर थैंक यू। एक्चुअली सम कोर्सेज जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है, बट वो भी प्लांट से ही रेलिवेंट होते हैं, मतलब ड्रग्स बन रही होती हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं जो कि होती मेडिकल पर्सपेक्टिव में लेकिन उनका ओरिजिन प्लांट से होता है, आप उनमें भी अप्लाई कर सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। You're welcome. नेक्स्ट निगत मुनीर, आप क्वेश्चन पूछते हैं। Assalamualaikum. Sir, I want to ask, can we apply during our undergraduation, or can we apply only after completing our graduation? यू नीड 6 सेमेस्टर्स रिजल्ट। 6 सेमेस्टर्स का रिजल्ट अगर आपके पास है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी से बनवा कर आप अप्लाई कर दें, यू आर एलिजिबल। और डिग्री आप बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं। Because Okay, actually sir. there's a total gap of 1 year between your application and then your actually enrollment in the master's program. तो उस 1 साल के अंदर अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो सकती है तो then you can apply on the basis of 6 semesters. Okay, sir. नेक्स्ट अली, आप क्वेश्चन पूछना है। Assalamu alaikum, sir. Sir, myself, Mustafa. I have a question. I finished my degree in industrial engineering in 2020, and now I have 3+ years experience as an assistant manager in a Japanese-based company in Karachi. So I just wanted to ask that
कि मैं कौन से प्रोग्राम्स में एनरोल हो सकता हूँ और कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें मैं स्कॉलरशिप अवेल कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल इतना आइडिया नहीं है अभी किसी भी ऐसे प्रोग्राम का या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी का। तो काइंडली अगर आप मुझे इस बारे में थोड़ा डिटेल से गाइड कर दें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। अली देखिए, मैंने शुरू में ड्यूरिंग माय सेशन मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको अगर इरेस्मस प्रोग्राम्स पे अप्लाई करना है तो आपको इरेस्मस कैटलॉग गूगल पे लिखना है, इरेस्मस कैटलॉग, उसको ओपन करें और देन जी उसके अंदर फिल्टर आप लगाएं इंजीनियरिंग का, और इंजीनियरिंग की जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन इन माय प्रोग्राम सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स इंजीनियरिंग वी हैव 3 पीपल फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी प्रोग्राम्स अगर कोई रेसमस से अदर हैं, देयर आर एक्चुअली लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, अगर आप वो डिस्कस करना चाहते हैं तो वो इस सेशन में नहीं हो पाएगा, बट यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी, आप हमजा भाई से या कहीं से भी आप मेरा कॉन्टैक्ट लेके, या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप कहीं से मुझसे रब्ता करना, आई कैन गाइड यू पर्सनली देन। ओके सर, इट विल बी वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। जो भी थोड़े से इररेलेवेंट या अगर पर्सनल कांटेक्ट या कोई भी इररेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन शेयर हम ग्रुप में कर देंगे, तो आप लोग ठीक सर। टू बी वेरी एग्जैक्ट इस प्रोग्राम से जो रेलिवेंट हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रहमान अवान, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप यूँ अस्सलाम वालेकुम। कीजिएगा अहमद, एक्चुअली आप मेरा मेरा कॉन्टैक्ट या मेरी प्रोफाइल या कहीं से शेयर कर दें, जिन जो जो क्वेश्चन हैं दे कैन आस्क मी पर्सनली एज वेल, जहाँ भी कंफ्यूजन है, और एरास्मस से रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट कोई मैटर नहीं करता एक्चुअली, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर भी है, तो आई बिलीव आई कैन गाइड देम इन दैट वे एज वेल। थैंक यू सो मच, आई विल जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट विद देम। और नेक्स्ट एक और भी मैं चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि फेसबुक पे जो भी आपको लेट्स सपोज इरासमस है या कोई भी और स्कॉलरशिप है, उसके ग्रुप्स फेसबुक पे आप थोड़ा बहुत सर्च आउट करेंगे तो आपको मिल जाते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन बनी होती हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो कि, और इवन उनकी प्रोफाइल्स भी मिल जाती हैं। तो जो लोग कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें किस तरह से अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करनी है, आप पिछले इल्यूमिनाइट में देख सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ बहुत अच्छी आपने मेंशन की कि आप उस प्रोग्राम की रेलिवेंट वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर सर्च आउट करें कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से। तो ये दो चीज़ें आप फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह प्रोफाइल हो जाएगी। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। नेक्स्ट रहमान अवान, आप अपने क्वेश्चन पूछिए। Am I audible? या यस Hello, am I audible? यस ओके सर, यस यू मेरे तकरीबन 3 सवाल थे। सर मैंने पूछना था कि हम एट अ टाइम कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं एरास्मस में? एज पहला मैनी ये एज यू क्वेश्चन है। कैन, ओके, मैनी कोई एज यू लिमिट कैन। नहीं है। ओके, और सर ये प्रोग्राम टू प्रोग्राम डेवलप ये मैटर करता है कि हम पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं या उधर ही रह सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. क्या ये हर प्रोग्राम कहता है कि आपको आप इधर ही रहना वापस आप होगा? जब चाहें आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप अब इवन ओके। अब अभी हॉलीडेज हैं, अभी क्रिसमस की हॉलीडेज चल रही हैं, वी आर फ्री टू गो एवरीवेयर, हम घर भी जा सकते हैं, हम ट्रैवल करना चाहें ट्रैवल भी कर सकते हैं। और आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप वापस पाकिस्तान आए, आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, यू आर कितनी नॉट देर की बाउंड टू हॉलीडेज स्टे रहते हैं एनीवेयर। वो? हॉलीडेज समर की हॉलीडेज होती हैं, 2 मंथ्स की होती हैं हर साल, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, और इसके अलावा विंटर की हॉलीडेज होती हैं 2 वीक्स की, दैट्स इट। बाउंड नहीं है आप उधर ओके। स्टे करने के लिए, बट सर ये एक कि और जस्ट क्वेश्चन अपनी है। सिलेक्शन बनाने के लिए, अपनी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को उनके रेलिवेंट बनाना बहुत जरूरी है। वो ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी है। सर तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने अभी मेरी जो है ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट हुई है, अभी मुझे नवंबर में ही डिग्री मिली है। तो आई वाज एप्लीकेंट ऑफ 476 वीज़ा, बट अब चूंकि वो बंद हो चुका है तो आई एम रियली डिप्रेस्ड। तो आर देयर एनी अपॉर्चुनिटीज लाइक ऑफ वर्किंग वीज़ाज जो आपको पता हो? यहाँ यूरोप में एनीवेयर इन द स्कॉलरशिप वर्ल्ड। स्कॉलरशिप की बात करें या वर्किंग वीजा की बात करें? वर्किंग वीज़ा की। वर्किंग वीजा तो ऑन योर ओन अगर आप जाएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, बट एक्चुअली वर्किंग वीजाज लेने के लिए ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पे लोग अप्लाई करते हैं। यू गेट एजुकेशन फ्रॉम दिस कंट्रीज एंड देन यू कैन हैव अ गुड जॉब हियर। अदरवाइज जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो बेसिकली उनके लोकल ग्रेजुएट्स को ही हायर करते हैं। So first you need to be a local graduate by getting education in their country and then you can get selected. Otherwise फिर गल्फ पूरा अवेलेबल है आपके लिए, कतर जाएं, दुबई जाएं, सऊदीया जाएं, वहां तो आप ओपनली जाके सर्च आउट कर सकते हैं। That's it. सही, थैंक यू सर। नेक्स्ट सैयदा शहवार, आप
अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी रिसेंटली जो है एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अपना कंप्लीट किया है। तो मुझे अपनी हेल्थ के रिलेटेड स्किल्स जो है ना वो थोड़ी-सी गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत कम मिली हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड या मैनेजमेंट एमबीए में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के मैं देखूँ प्रोग्राम्स, तो वो मुझे बहुत कम मिले हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं जिस भी प्रोग्राम में ये अप्लाई करने की कर रही हूँ, तो उसमें आइल्स और टॉफल और ये सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशंस माँग रहे हैं। तो वो तो मेरे पास नहीं है। तो क्या मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ इन कोर्सेज़ के अप्लाई के लिए कि अगर ये माँग रहे हैं तो फिर मैं अप्लाई ना करूँ? और दूसरी बात ये कि एक तो मुझे जो भी मैं कोर्स अप्लाई करना चाह रही होती हूँ जिस प्रोग्राम में भी, तो उसकी मुझे देखती हूँ मैं कि उसकी ड्यू डेट क्या है, तो या तो ऑनगोइंग होती है, तो उसमें जो है 2025, 2027 इस तरह की भी डेट्स मेंशन होती हैं ना ऑनगोइंग रिलेटेड जो प्रोग्राम्स में मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो वो मुझे समझ नहीं आता था कि इसका क्या मतलब है कि 2025, 2027 हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं? ये मुझे ड्यू डेट भी नहीं समझ आ रही कुछ प्रोग्राम्स की जो मुझसे रिलेटेड है। और मेरी फ़ील्ड जो है वो एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, तो प्लीज़ इसके रिलेटेड भी मुझे थोड़ा-सा गाइड कर दें कि मैं किस अपने बैचलर्स के बारे में आप बता सकते हैं, आपका बैचलर्स किसमें था? मेरा सिंपल साइंस था, वो मैंने केयू से जो है ना सिंपल बीएससी किया है मैंने। उसके बाद जो है ना मैंने एमबीए किया था इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट डाउ यूनिवर्सिटी से। अ, इसके ऊपर अगर आपका सिंपल बीएससी साइंस था तो आप मेडिकल के अंदर आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगी। उसकी रीजन ये है कि मेडिकल के ऊपर मेडिकल का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द वे। बट ये कि आपका क्योंकि एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का है तो आप एमबीए से रिलेटेड कोर्स कर सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोर्स आप कर सकती हैं एमएससी के अंदर, दैट आर एक्चुअली नॉट रेलेवेंट टू हेल्थ। अगर हेल्थ से रेलेवेंट नहीं भी है तो यू कैन गो इन दैट, नो इशू विद ठीक है दैट। सर, लेकिन सब में अगर आइल्स और टॉफल और ये सारी वो सर्टिफिकेशंस मांगी वो तो नेसेसरी हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके ऊपर कोई आपको कंसेशन नहीं मिलती। तो आईएलटीएस और अगर टोफल उनको चाहिए तो उनको चाहिए आपको वो सबमिट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई। ठीक है सर, और ड्यू डेट से रिलेटेड सर बता दें ये 2027 जो ड्यू मेंशन डेट जो मेंशन होती है वो हर प्रोग्राम का एक टाइमलाइन होती है, ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्जांपल दिस प्रोग्राम विल रन फ्रॉम 2016 टू 2025, 2016 से 2025। इस 2016 से 2025 के दरमियान जितने भी सेशन हैं 2-2 साल के वो एनरोल कर सकते हैं। अगर किसी प्रोग्राम के ऊपर मेंशन है कि ये प्रोग्राम 2025 तक चलेगा, इट मींस कि उसकी लास्ट एनरोलमेंट जो है वो लास्ट ईयर यानी कि 2023 में इस साल हो चुकी है। अगले साल वो एनरोलमेंट नहीं करेंगे 2024 में। तो अगर उनकी एप्लीकेशन अभी ओपन है तो वो सेल्फ बेसिस पे होंगी, ओपन स्कॉलरशिप पे नहीं होंगी। मजीद कंफर्म करने के लिए आप उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर को ईमेल कर सकते हैं, देर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। उनकी वेबसाइट से आप उनकी ईमेल लें और उनको ईमेल करके पूछ लें कि कैन आई अप्लाई एंड वुड आई गेट अ स्कॉलरशिप। क्योंकि उनकी अगर मेंशन डेट उनका ड्यूरेशन 2025 तक मेंशन है तो जनरली अब उनके पास स्कॉलरशिप नहीं होगी। 2023 के बाद एनरोलमेंट में स्कॉलरशिप नहीं होगी फिर। ओके सर, तो रीसेंट डेट्स की अगर मेंशन है डेट वगैरह, तो इसका मतलब है कि वो स्कॉलरशिप पे है। बेसिकली जो उनके पास फंडिंग होती है ना वो ड्यूरेशन फंडिंग की मेंशन की होती है उन्होंने कि 2000 अगर 25 तक चल रहा है तो फिर उसका मतलब 2000 लास्ट बैच जो फंडिंग वाला था वो 2023 से 25 वाला है। अगर उसकी ड्यूरेशन उन्होंने 2027 तक मेंशन किया तो इट मींस कि 2024 में जो एप्लीकेंट्स होंगे, 2025 में जो एप्लीकेंट होंगे और 2026 में जो एप्लीकेंट होंगे उनको भी फंडिंग मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। डेडलाइन एप्लीकेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, एप्लीकेशन डेडलाइन डिफरेंट होती है और वो सेल्फ पेइंग स्टूडेंट्स के लिए भी होती है। ठीक, थैंक यू सर। इजरा आप Assalamu alaikum. Can you hear me? जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि स्टडी गैप जो है वो कितना एक्सेप्टेबल है। और फॉर एग्जांपल आई डिड माय बीएस ऑनर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2019। उसके बाद जो है मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो गया। मतलब लाइक इट्स ऑलमोस्ट बीन 5 इयर्स मेरा स्टडी गैप है, बट आई एम अप्लाइंग फॉर एरास्मस और मैंने कुछ सर्च भी किया है लाइक फ्रांस। लेकिन एक क्वेश्चन आपने काफी सारे क्वेश्चन जो है मेरे कवर कर दिए हैं, लेकिन फ्रांस में जो है वो 20 ये एक क्वेश्चन मेरा ये था कि वहाँ पे एक ड्यूरेशन आ रही है 2025 तक, लेकिन उस पे मेंशन जो आ रहा है 2025 तक, तो इट्स मीन कि हम उसमें अप्लाई नहीं कर सकते एरास्मस के लिए।
आपका सेकंड क्वेश्चन मैं समझा नहीं, दोबारा बताइएगा। ड्यूरेशन वाला जो है 2025 तक जो है उसमें आ रही है ऑन गोइंग 25 तक, तो आप हम उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। नहीं, अगर फंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, आप एडमिशन ले सकती हैं, सेल्फ पेइंग पे ले सकती हैं। वो ड्यूरेशन फंडिंग की होती है, स्कॉलरशिप की होती है। और स्टडी गैप जो है वो मतलब अगर किसी स्टडी का है स्टडी एग्जाम गैप स्टडी गैप एक्चुअली होता क्या है, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। स्टडी गैप का मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन 2019 में एंड हुई और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, ये आपका स्टडी गैप होगा। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी थी तो फिर उसको स्टडी गैप नहीं कहते हैं यूरोप के अंदर। वो स्टडी गैप नहीं होता, वो आपका एजुकेशन से प्रोफेशनल की तरफ चला जाता है, बट आपकी लर्निंग सेम ही रहती है। और अगर इन डेट केस अगर आपने 10 साल भी अगर जॉब की है और आपने अगर अपना बैचलर्स जो है वो 2010 में किया था, तब भी आप एलिजिबल हैं। बल्कि आपके पॉइंट्स शायद ज्यादा होंगे, क्योंकि आपकी एक प्रैक्टिकल लर्निंग भी है एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ। तो 3 साल की, 4 साल की एक प्रैक्टिकल लर्निंग अलॉन्ग विद योर बैचलर्स, उसकी एकेडमिक लर्निंग, इट एक्चुअली मेक्स यू अ गुड कैंडिडेट। ओके। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आइल्स मैंडेटरी है क्या किसी भी मतलब एरास्मस में अप्लाई करने के लिए? बिकॉज अगर हम फॉर एग्जांपल फ्रांस ले लें, उसमें अगर हम अप्लाई करते हैं, वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, वहां पे उस वेबसाइट पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स की, तो एरास्मस के लिए जरूरी है? वेबसाइट के ऊपर रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेंशन होता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के सेक्शन के अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया होता है कि उनको इंग्लिश इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर क्या चाहिए। अगर आईएलटीएस टोफल वगैरह चाहिए तो वो भी मेंशन करेंगे। अगर उनको प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, तो वो भी मेंशन होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान की जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये आपको बना के दे देगी और वो चल बिल्कुल जाएगा। ऐसे इन ही। दैट केस आपको आईएलटीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये मेंशन होता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ भी मेंशन ना किया उन्होंने, मेंशन होता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप अभी आपने एक वेबसाइट ओपन की हुई थी FIPDES, सॉरी, आपने एक कौन? वेबसाइट ओपन की हुई थी हम्म FIPDES, फ्रांस हम्म की हम्म हम्म, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। तो हम्म। जब हम ये एट्यूड्स इन फ्रांस में उसकी सब्जेक्ट मतलब वो सेक्शन क्लिक करते हैं, तो उसमें आ रहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कोर्स जो है वो क्लोज हो गई है, तो हम कैसे उसको अगर आप बता सकते इरेस्मस की हैं? अगर आप इरेस्मस की बात कर रही हैं तो फिर आपको जाना है इरेस्मस कैटलॉग के ऊपर, और वहां आपको सारे प्रोग्राम्स की वेबसाइट्स मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं होती, ये प्रोग्राम की वेबसाइट होती है। प्रोग्राम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज का कॉम्बिनेशन होता है। आप पहला सेमेस्टर एक कंट्री में होता है, दूसरी यूनिवर्सिटी किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरा सेमेस्टर होगा, तीसरा सेमेस्टर किसी और यूनिवर्सिटी में होगा, ऐसा होता है। ओके। तो ओके। अपनी वेबसाइट पे जाके, इरेस्मस कैटलॉग पे जाके अपने अपने प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं जो आपसे रेलिवेंट है, और उनको ओपन करके उनकी आप डेडलाइन और यूनिवर्सिटीज वगैरह सब कुछ आप चेक कर सकती हैं। ओके, लेकिन वो एड्यूज इन फ्रांस जो है उसमें हम फिर नहीं करेंगे उसको, डायरेक्ट उस वेबसाइट पे जाके करेंगे? नहीं, प्रोग्राम की जो वेबसाइट आप उस पर करेंगे अप्लाई। अगर आप ठीक। फ्रांस की किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप अप्लाई करेंगे। डिपेंड करता है। ओके। अगर वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली अपने इस प्रोग्राम के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू भी एनरोलमेंट करती है तो फिर आप वहां से भी अप्लाई कर सकती हैं, बट इन दैट केस मेक श्योर करें कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करें तो देन यू हैव टू बी एन इरेस्मस कैंडिडेट, और इरेस्मस की वेबसाइट से ही आप अप्लाई करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एरास्मस स्कॉलरशिप भी है, बाकी स्कॉलरशिप्स हैं, तो हम कैसे उस यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हैं कि अगर हम एरास्मस में फॉल नहीं कर रहे तो आप हमें बाकी कोई भी उनकी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं या कोई भी उनका कंट्री स्कॉलरशिप हो सकता है, वो उसके लिए आप थोड़ा बता दें। अगर आप इरेस्मस स्कॉलरशिप के अंदर आप फॉलो नहीं करते, बट आप अगर दोबारा स्टिल आप इरेस्मस के प्रोग्राम पे इरेस्मस की वेबसाइट से अगर आप अप्लाई करते हैं, तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सिलेक्शन के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं वो आपको दे देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जो 300 यूरो पर मंथ की होती हैं, वो आपको वो ऑफर करती हैं कि पार्शली हम आपको इस तरह फंड कर सकते हैं, लेकिन इरेस्मस स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। दिस हैपेंस व्हेन यू अप्लाई फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ इरेस्मस। और अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर ड्यूरिंग एप्लीकेशन वहाँ पे अवेलेबल फंडिंग्स के ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू टिक चेक या दैट यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस। इफ यू टिक चेक देन उसके बाद नीचे लिस्ट आ जाती है कि ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, और देन उसके बारे में आप देख सकते हैं कि आपको इनमें से कौन सी सूटेबल लग रही है, और आप लेटर के अंदर डिस्कस कर सकती हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए टू फुलफिल योर एजुकेशन।
ओके ओके, अगर हमें क्लियरली जो है आइडेंटिफाई नहीं है कि यूनिवर्सिटी, मतलब समझ नहीं लग रही कि यूनिवर्सिटी किस तरह का स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, तो हम कवर लेटर में ये मेंशन कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जो भी स्कॉलरशिप कर रही है, तो आप हमें काइंडली उसके लिए कंसिडर करें। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट फर्स्ट यू नीड टू गेट इन्फॉर्मेशन कि उस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स है कौन कौन सी। उसके लिए हर यूनिवर्सिटी का एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है। यू कैन गेट योर देयर ईमेल फ्रॉम दैट, और उनकी ईमेल पे उनसे ईमेल करके उनके पूछें कि आई वांट टू गेट एडमिटेड बट आई नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की लिस्ट दे देंगे कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। अभी फ्रांस के अंदर मास्टरमाइंड, आई गेस मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप चलती है, और भी काफी सारी स्कॉलरशिप्स हैं, और वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वही आपको दे सकते हैं। अकाउंटिंग के आप डिपार्टमेंट को ईमेल करें और फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए उनसे पूछें। ओके, अगर आपको इंफॉर्मेशन है कुछ स्कॉलरशिप के बारे में, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कर लें पर्सनली, सो देन आई कैन व्यू योर केस सेपरेटली मे बी। आपके फील्ड पे डिपेंड ओके करता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, You're welcome. अल्लाह हाफिज। Next, Eamon, you can ask your question. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बताया कि आपने सस्टेनेबिलिटी इन इंजीनियरिंग में किया हुआ है व्हाटएवर, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि अभी एरास्मस में कौन से हैं जो कि जर्मनी स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी में स्कॉलरशिप्स हों? जस्ट जर्मनी जर्मनी। जर्मनी स्पेसिफिक। जी। नहीं, ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जर्मनी स्पेसिफिक नहीं होता, सस्टेनेबिलिटी के प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल चल रहे हैं, और ये तो गूगल आपको ज्यादा बेहतर बता सकता है। और उसमें ये होता है, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइक आपका स्टडी गैप वाला इशू होता है कि आपको उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लाइक मोर देन 6 इयर्स नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह। रीजन होना चाहिए अपने गैप को जस्टिफाई करने के लिए। अगर आपका गैप प्रोफेशनल रीजन की वजह से साथ जॉब वगैरह किया, तो फिर बेशक 15 साल का गैप है, डजंट रियली मैटर। मेरे मेरे अपने बैच के अंदर मोर देन 35 ईयर्स एज के लोग भी हैं। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स और प्लस 15-15 साल के गैप वाले लोग भी सिलेक्ट होते हैं। तो डजंट रियली मैटर, अगर आपके पास एक रीजन है उसको जस्टिफाई करने का। अगर आप इफ समवन इज बिजी इन हाउस और मे बी कोई बीमार हो गया है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड रहा है, इस वजह से उसका स्टडी गैप है, तो अगर उसको जस्टिफाई कर दे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो इट वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एप्लीकेशन। जस्टिफाई अच्छा, होना चाहिए जस्ट। आप मुझे यूनिवर्सिटीज का बता सकते हैं, मतलब जहाँ जहाँ सस्टेनेबिलिटी है? नहीं, सारी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर है, आपको ये गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। ओके। Next, Naisha Hakim, you can ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो मैंने ना अभी मैं फाइनल में हूँ अपने बीबीए का ग्रेजुएशन में। तो अगर हमारा जो सीजीपीए है वो अगर 2.8 या 2.9 है, तो सर हम क्या ऐसे मतलब एक्टिविटीज में या मतलब कोई करें जो उसमें हमारा जो है ना वो प्रोफाइल हमारा स्ट्रांग हो और सिलेक्शन के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाए। देखें, एरास्मस के अंदर एटलीस्ट 3.2 3.3 से कम वाले स्टूडेंट्स तो सिलेक्ट नहीं होते। बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स एंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी हर कंट्री की गवर्नमेंट जो एक कुछ स्कॉलरशिप देती है। फॉर एग्जांपल थाईलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी, मैंने उसमें अप्लाई किया। मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी, टर्किश स्कॉलरशिप है, टर्किश बटसलारी। इस तरह की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती हैं। देन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्पेसिफिक कंट्री में जाना चाह रही हैं, और उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल ऑप्शंस को सर्च करें, तो वहां आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। दैट वे यू कैन अप्लाई एंड गेट अ स्कॉलरशिप। बट इरेस्मस को अगर आप देखें, तो इरेस्मस में फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। अगेन बाकी बाकी फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है, तो ऑनलाइन कोर्सेज करें अपने प्रोफाइल, अपने प्रोग्राम से रेलिवेंट, और उस तरह से आप अपने आप प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकती हैं। Next, Abdullah Jadoon, थैंक यू सो you मच can. सर। Assalamualaikum, sir. Sir, I am Abdullah Jadun from KPK. Sir, my question is, I know my GPA is less than 3, so I am a weak candidate. So how can I work on my profile? Firstly, ये मेरा क्वेश्चन था। सेकंड ये है कि सर आप हमें ये बता दें कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं अदर देन एरास्मस मंडस, तो हम उन स्कॉलरशिप्स को ग्रैब करने की कोशिश करें रेदर कि हम इस पर एरास्मस मंडस पर अपना टाइम वेस्ट करें। थैंक यू। लेकिन स्कॉलरशिप्स बेसिकली 3 तरह की होती है।
अगर आप मास्टर्स को देखें तो मास्टर्स में 3 कैटेगरीज होती हैं स्कॉलरशिप की। पहली कैटेगरी होती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के अंदर इरेस्मस आ जाता है, फुल ब्राइट आ जाता है, शिवनिंग आ जाता है और कॉमनवेल्थ आ जाता है। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे होते हैं और बहुत सालों से चल रही हैं। इनके अंदर मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर होता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वो स्कॉलरशिप्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हर कंट्री की। आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, थाईलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। आप मलेशिया जाना चाहते हैं, मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। तुर्की जाना चाहते हैं, टर्किश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इस तरह ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो ऑस्ट्रेलिया की स्पेसिफिक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं हर कंट्री की, उनके अंदर मेरिट थोड़ा सा कम होता है, आप उनमें अप्लाई करें। देन उसके बाद आ जाती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। आप हर कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो होती है वो भी स्कॉलरशिप दे रही होती है। मैं मिसाल दूंगा, अगेन थाईलैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी है चूला लोंगकोंग यूनिवर्सिटी। उनकी चूला लोंगकोंग की अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंदर मेरिट और कम होता है, आप उसमें अप्लाई करें। आप अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबोर्न यूनिवर्सिटी है और भी काफी सारी यूनिवर्सिटी है जो कि अपनी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मेलबोर्न यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। थाईलैंड की बात करें चूला लोंगकोंग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। इस तरह मलेशिया के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो उस यूनिवर्सिटी के नाम से स्कॉलरशिप होती है, उनके अंदर मेरिट और कम होता है। तो आपने करना ये है कि पहले आप लिस्ट बनाएं कि आपको कौन से कंट्री जाना है, उन कंट्रीज के अंदर देखें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, अगर उनमें अप्लाई करें और उसके अलावा फिर आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हाई टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज हैं उनको फाइंड आउट करें कि कौन कौन सी है। और देन उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या सर्च करें या उस यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए उनसे पूछ लें कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के अंदर मेरिट जनरली कम होता है, तो आप उनको फोकस में रखें। Next, Mohammed Shan, you can ask your question. Unmute yourself. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इसमें कोई फी होती है अप्लाई करने की, और दूसरा ये कि किन किन कंट्रीज में हम इरस्मस के थ्रू जा सकते हैं, इसमें क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? कुछ प्रोग्राम्स पे लाइक इरेस्मस की अगर आप बात करें तो इरेस्मस के तकरीबन सारे ही प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, एप्लीकेशन नहीं होते, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स स्टिल हैं जिनकी एप्लीकेशन की फीस होती है। लाइक 10% कोर्सेज ही हैं जिनकी एप्लीकेशन की फीस होती है। इन माय केस मैंने कुछ प्रोग्राम्स पे एप्लीकेशन फी पे की थी, कुछ में बिल्कुल नहीं थी, फ्री थी एप्लीकेशन। तो इट टोटली डिपेंड, तो जनरली ये फ्री होती है। दूसरा क्वेश्चन कौन कौन से कंट्रीज में जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करें। उस प्रोग्राम में जो कंट्रीज पार्टनर जो कंट्रीज हैं आप सिर्फ वहीं पर जा सकते हैं। अगर एक प्रोग्राम है जो कि फ्रांस और जर्मनी में होगा तो वो फ्रांस और जर्मनी में ही होगा और किसी कंट्री नहीं जा सकते। तो इट डिपेंड्स कि आप जिस प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे हैं उसके पार्टनर कंट्रीज कौन कौन से हैं, सेकंड सेमेस्टर कहाँ पे होगा, थर्ड कहाँ पे होगा, फोर्थ कहाँ पे होगा, ये डिपेंड करता है उस पे ओके प्रोग्राम पे। सर, जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तब हमारा आर्ट्स क्लियर होना लाजमी है या बाद में हो सकता है? एप्लीकेशन के टाइम पे अगर आपके पास आयल्स नहीं है तो आप एक एक्सेप्शन उनसे ले सकते हैं कि मैंने आयल्स के लिए अप्लाई कर दिया। यू एक्चुअली नीड टू अप्लाई, बुक का डेट। और तब उनको ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको 1 मंथ के अंदर या 2 वीक्स के अंदर मैं आपको आयल्स का रिजल्ट प्रोवाइड कर दूंगा। बट उसके लिए आपको प्रूफ देना जरूरी है कि आपने आयल्स की डेट ऑलरेडी बुक कर ली है, उनको पेमेंट की स्लिप और वो सारी चीजें प्रोवाइड करना जरूरी है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। Next, you can ask Shiraz Umar. You can ask your question. अस्सलाम वालेकुम सर, कैन आई ऑडिबल? या सर मेरा नाम शराज उमर है, मैं बेसिकली तो पंजाब से, लेकिन मुझे OJTCL की स्कॉलरशिप मिली थी IPS अखर में। मैंने इलेक्ट्रिकल पावर स्पेशलाइजेशन में मेरा लास्ट सेमेस्टर है, 7th मैंने कर लिया है। और मेरा CGPA OBE क्योंकि यहाँ पे सिस्टम है और हमारी डिग्री भी वाशिंगटन एकड़ से रिकग्नाइज है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आया अल्हम्दुलिल्लाह 3.35 to 3.41। तो ये है कि HC अगर परसेंटेज देखी जाए तो वो काफ़ी यानी कि बेहतर हो जाती है इस सेंस। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आईकॉमेट आईसोनेट और इस तरह के एक रिसर्च पेपर पे भी काम कर रहा हूँ। तो मैं अगर एरasmus अप्लाई करता हूँ तो मुझे किन ऐसी कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए, अगर इसमें जहन में रखते हुए कि जो मेरी डिग्री के यानी कि पर्सपेक्टिव्स हैं। दूसरा ये कि मेरे पास इंग्लिश सर्टिफिकेट प्रोफिशिएंसी का कोई ऐसा लेटर तो नहीं है,
मेरे पास यूनिवर्सिटी का एक पड़ा हुआ है। उसके अलावा अपना आइल्स वगैरह तो नहीं किया हुआ, लेकिन एक जो लिंगुआ टेस्ट है वो मैंने देने का सोच रहा हूँ, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मंथ हो भी जाएगा। सर मैं एज आगे मेरा जो है माइंड है वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, या स्मार्ट ग्रिड या HVDC जो ट्रांसमिशन हमारी यहाँ पे आ रही है पाकिस्तान में, इसकी तरफ ही मेरा FIP भी इसी पर ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से हो जाएगा, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे उसके। तो वो सर उसके लिए अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ इटली वगैरह में, यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे आइल्स वगैरह इतनी चाहिए मुझे, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा कैडर कर दें। मैं इतना आपको मुझे बताता हूँ। मुझे आप एरास्मस कैटलॉग पर जाएं और पावर से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड जो एरास्मस के प्रोग्राम्स हैं आप उनको लिस्ट बना लें उनकी, और उनके रिक्वायरमेंट्स को आप चेक कर लें। अगर वहाँ पे आईएल्स की कोई रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है या उन्होंने अगर डुओलिंगो वगैरह मेंशन किया हुआ है। आई रिमेंबर अ केस फ्रॉम लास्ट ईयर। एक स्टूडेंट ने सिर्फ डुओलिंगो टेस्ट सबमिट करवाया था और उसको यूनिवर्सिटी ने कंसेशन दे दी थी कि उनको फ्री हैंड दे दिया था कि आप आईएल्स सिर्फ डुओलिंगो टेस्ट सबमिट करवा दें और प्रोफिशिएंसी लेटर सबमिट करवा दें, तो उनकी सिलेक्शन हो गई थी। तो इन दैट केस यू नीड टू कॉन्टेक्ट द स्पेसिफिक प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर से बात करें कि ये कोर्स आप दे सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या आपको कोई भी कंसेशन दे सकते हैं आईएलटीएस के रिलेटेड में। अगर अगर उनके पास इस तरह का कोई सिस्टम होगा तो वो आपको जरूर दे देंगे। जस्ट नीड टू टॉक विद देम। और कौन कौन से कंट्री में आपने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ। वो अगेन डिपेंड करता है आप जिस जिस प्रोग्राम पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आप उस प्रोग्राम में जो कंट्रीज इन्वॉल्व है, पार्टनर कंट्रीज, आप वहीं जा सकते हैं। और फर्स्ट पे आपने में परसेंटेज का डिस्कस किया था कि सीजीपीए नहीं, परसेंटेज वाइज डिस्कस है। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट नोट करना, कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम में ऐसे प्रोफेसर वगैरह ज्यादा मार्क्स नहीं देते, तो वहाँ का जो टॉपर होता है उसका सीजीपीए भी 3.3 3.2 ही होता है। ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हैं जो कि सीजीपीए नहीं बढ़ने देती बच्चों का। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर लें जो कि होता है एकेडमिक एक्सीलेंस लेटर। उस लेटर के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी आपको या आपका चेयरमैन डिपार्टमेंट का या डीन वो ये मेंशन कर देता है कि ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स में है अगर आप हैं, या टॉप 5 में है तो वो लिखवा लें उनसे कि आई एम अमंग द टॉप 5 स्टूडेंट्स, या अगर टॉप 3 में तो टॉप 3 में लिखवा लें। इससे आपकी एप्लीकेशन को एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ऑल्दो सीजीपीए 3.3 है बट ही इज अमंग द टॉप स्टूडेंट्स। तो इससे वो सीजीपीए कम वाला जो फैक्टर है कि मेरा सीजीपीए बहुत कम है शायद सिलेक्शन होगी या नहीं, वो काफी हद तक वो मिनिमाइज हो जाता है वो फैक्टर। तो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पे टॉपर्स का भी सीजीपीए कम होता है एंड यू आर अमंग टॉप 10 कैंडिडेट्स, तो आप वो लेटर यूनिवर्सिटी से ले लें, एकेडमिक एक्सीलेंस लेटर, और वो सबमिट करवा दें। और जो इरेस्मस की यहाँ कमेटीज होती हैं इनको एक्चुअली पता है कुछ यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम जो रिजल्ट आता है वही 3.3 3.2 का होता है। तो दे एक्चुअली नो कि कुछ कंट्रीज के अंदर ये लिमिट होती है कि 4 में से मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं उनका भी 3.2 3.1 इतना ही होता है सीजीपीए। तो नो वरीज इन दैट। Okay, next, Anusha, you can ask. Anush? हेलो सर। सर आई वांट टू आस्क, आपने ये मेंशन किया कि आपके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हो वो प्रोग्राम से रिलेटेड हो, बट लाइक जस्ट लाइक जैसे यू ग्रेड में होता है कि आपके एक्स्ट्रा करके जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, लीडरशिप एवरीथिंग, जो अगर वो सर्टिफिकेट हमारे पास है और हम इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो हम ऐड करते हैं तो लाइक इट्स अ प्लस पॉइंट, और जस्ट वो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो इसके साथ इररेलेवेंट हो जाएगा। जो इरेस्मस प्रोग्राम्स हैं वो एकेडमिक हैं, तो एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर वॉलंटियर वर्क या को करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स लगाना वो अपनी एप्लीकेशन खराब करने के बराबर है। मैं खुद भी यूग्रेड स्कॉलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे वॉलंटियर वर्क के और को करिकुलर के प्रोग्राम्स सर्टिफिकेट्स हैं, यूएसए के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ भी मेंशन नहीं किया जस्ट बिकॉज आई डिडंट वांट माय एप्लीकेशन टू बी इरेलीवेंट। तो आप सिर्फ वो मेंशन करें जो प्रोग्राम से रेलिवेंट है। और आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप ये जरूर मेंशन कर सकती हैं कि आपका एक सेमेस्टर उसमें यूएसए में हुआ था, यूग्रेड में हुआ था, बस इतना काफी है। सर्टिफिकेशंस के अंदर वो सर्टिफिकेट्स और वॉलंटियर वर्क ऐड करने की जरूरत नहीं है। कीप योर एप्लीकेशन रेलिवेंट। Next, Jawad, you can ask the question. अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, मेजर्स पावर में है, कॉमसेट्स इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद कैंपस से। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मैं अपनी जो आगे मास्टर्स है वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ।
तो क्या हम जैसे जो स्टूडेंट होते हैं जो अपनी मेन स्ट्रीम को चेंज करते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रीम को, इनको यूनिवर्सिटीज़ कैसे एंटरटेन करती हैं अगर हम उनके मैनेजेरियल कोर्सेज में अप्लाई करें? और अगर हमें उनके कोर्सेज में यानी मैनेजमेंट के कोर्सेज में हमें मिल जाता है एडमिशन, हम वो पूरा भी कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जैसे इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट, फिर हमारी जो एजुकेशन हो जाएगी, हमारे लिए क्या स्कोप है इस तरह बाहर? और फिर हमें ज़ाहिर-सी बात है कि अप्लाई करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग उन्हें एविडेंस भी देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी कि हम क्यों स्ट्रीम शिफ्ट करें। क्या ये ज़रूरी है या ईज़िली जो है वो हमें मैनेजमेंट वाले कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं? ये सवाल मेरा जनरल स्कॉलरशिप्स के लिए है थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी हैं, सिर्फ़ किसी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए नहीं। आपकी स्कॉलरशिप का जवाब ये है कि मिल जाता है एडमिशन। आप फील्ड स्विच कर सकते हैं, बट वो स्विच एक थोड़ी सी लिमिट के अंदर होता है। अगर मैनेजमेंट का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रेलिवेंसी आपके पास से कोई 10% भी है, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। विच मीन्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी, तो आप मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो आपको उसके अंदर जब एप्लीकेशन बनानी है तो आपको उसमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप क्यों स्विच करना चाहते हैं। और इसका जवाब ये है, आप प्रूफ कैसे करेंगे? आप अपना जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपने सिर्फ अपना इंटरेस्ट शो करना है, अपने आप को एक रेलिवेंट कैंडिडेट शो करना है कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं और आपके फ्यूचर गोल्स इसी प्रोग्राम से मैच करते हैं। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और उन गोल्स को उस यूनिवर्सिटी के गोल्स के साथ जस्ट रेलिवेंट बना लें, आपकी सिलेक्शन हो सकती है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपने बीच में एक सेकंड क्वेश्चन और भी पूछा था, जस्ट फॉरगॉट, कैन यू रिपीट? मैं ये फिर जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जब मैं एप्लीकेशन स्विच करूँगा और एप्लीकेशन में जस्टिफिकेशंस ऐड करूँगा, तो क्या इसमें मैं फिर अपना वॉलंटियरिंग वर्क और सर्टिफिकेशंस डाल सकता हूँ जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है? जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एग्जैक्टली। जी जी जी। अच्छा, सेकंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, सब जानते हैं, 476 का एक ब्रदर ने भी इसके बारे में बात की, तो बहुत सारे 476 कैंडिडेट्स ने जो है वो पीटीई दिया हुआ है, इंग्लिश टेस्ट। तो हम पीटीई को, मैंने ये देखा है जितनी भी स्कॉलरशिप्स आती हैं वो टोफल और आइल्स मेंशन करती हैं, हम पीटीई को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? ये हमारे किस काम आएगा अगर आप अगर हम आप आप आपको उनको ईमेल करनी है, तो कोऑर्डिनेटर को ईमेल करें और उनसे पूछें कि मेरे पास ये पीटीई का सर्टिफिकेट है, इज इट एप्लीकेबल, ये चल सकता है या नहीं। जनरली ये होता है कि आईएलटीएस और टोफल जिन वेबसाइट्स ने मेंशन किया होता है, अगर आप उनको एक एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे दें कि ये सर्टिफिकेट भी सम कंट्रीज में एज एन इंग्लिश सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होता है, तो वो कंसेशन दे देते हैं। आप जस्ट उनसे पूछें। और फोर्थ चीज जरूरी नहीं है, मैंने 2-3 दफा ये बात एक्चुअली डिस्कस हो चुकी है, जरूरी नहीं है कि आपने अपनी ही फील्ड में अप्लाई करना है, आप रेलिवेंट फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ही एक दोस्त हैं, ही हैज अ बैकग्राउंड इन सिविल इंजीनियरिंग एंड नाउ ही इज डूइंग फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग इन एरास्मस। तो कहाँ सिविल इंजीनियरिंग, कहाँ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, लेकिन रेलिवेंसी ड्रा करके आप एडमिशन कहीं पे भी ले सकते हैं। आपके फ्यूचर ठीक है गोल्स और आपकी रेलिवेंसी होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये था जो मिस हो गया कि ऐसे जो कि आपका जिस फ्रेंड है जिसने शिफ्ट किया इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट या एनी अदर यस फील्ड, यस यस तो यस यस। हम जैसे ये लोगों के लिए क्या? ज्यादा, आई वुड से कि उनका स्कोप ज्यादा होता है, क्योंकि इन दैट केस आप टेक्नो कमर्शियल बन जाते हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स फ्रॉम जी इंजीनियरिंग जी आते हैं और बिल्कुल। कमर्शियल स्किल्स आपके मैनेजमेंट से आ जाते हैं, तो इनका स्कोप थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू द नॉर्मल कैंडिडेट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर। यू वेलकम। All right, next, Aziz Haq. एजाज हक। जी अस्सलाम वालेकुम, एजाजुल हक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना टाइम मतलब दिया हम लोगों को, और बहुत ज़्यादा मैं इस बात के ऊपर आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने जो मास्टर्स किया हुआ है एक कराची यूनिवर्सिटी से, वो इस्लामिक स्टडीज़ में किया हुआ है। अच्छा, मैं कैटलॉग मैंने चेक किया था, उसके अंदर जैसे उनका रिलीजियस डाइवर्सिटी एक प्रोग्राम है रेड ग्लोबल के नाम से। तो मैं उसके ऊपर अगर अप्लाई करता हूँ, खामोश, मैं उसके ऊपर अगर अप्लाई करता हूँ तो वो एक रेलिवेंसी है मतलब मेरे प्रोग्राम के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि जैसे मैंने आईआर इंटरनेशनल रिलेशन और इसी तरीके से मैथ कम्युनिकेशन के 4-4 कोर्सेज पढ़े हुए, अगर मैं रेड ग्लोबल के अलावा दूसरे प्रोग्राम की तरह अगर अब जाता हूँ, तो वो जो मैंने 4 कोर्स पढ़े थे मतलब माइनर्स के अंदर आईआर के और मैथ कम्युनिकेशन के, तो क्या एक रेलिवेंसी मतलब जनरेट हो सकती है? इस हवाले से ज़रा मुझे थोड़ा-सा गाइड कीजिए। और दूसरी बात ये
कि जो मतलब रेड ग्लोबल की जो वेबसाइट मैंने चेक की थी, तो उनका इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया वही आइल्स वगैरह का मतलब है उनका ना, CT1 और C2 के हवाले से जो लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन होती है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो मैं अगर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट उनको मतलब दे दूँ, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? थोड़ा सा ज़रा इस बारे में गाइड कीजिएगा, जज़ाकल्लाह। पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, देन आई विल कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोफिशिएंसी लेटर अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन यू हैव द फ्री हैंड कि आप प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अगर उन्होंने प्रोफिशिएंसी लेटर नहीं मेंशन किया हुआ है, देन चांसेस नो है कि आप IELTS के बगैर सबमिट नहीं करवा सकते, लेकिन स्टिल 10% चांस होता है इफ यू टॉक टू देम। बात करने से मसलों के हल निकलते हैं। आप उनसे अगर ईमेल में अगर उनको एक वैलिड रीजन दे दें, उनको ये जस्टिफाई करवा दें कि यू आर एक्चुअली गुड इन इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, मुझे एक एग्जांपल याद है, देयर वाज अ कैंडिडेट हु लिव्ड फॉर लाइक 1 year इन यूरोपियन कंट्री, नॉट यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया। बट उसके पास IELTS वगैरह कुछ नहीं था, तो उसने अपना प्रूफ उसने ये दिया था, क्योंकि मैं इस कंट्री में रह के आ चुका हूँ, विच मीन्स कि आई कैन एक्चुअली कम्युनिकेट गुड इन इंग्लिश, बट मेरे पास IELTS नहीं है, आई कैन प्रोवाइड प्रोफिशिएंसी लेटर। तो उसको उन्होंने कंसेशन दे दी थी। तो आप बात करके देखें, ईमेल करें उनको, शायद वो आपको भी किसी पॉइंट ऑफ किसी तरह से कंसेशन दे दें। बट जनरली अगर प्रोफिशिएंसी लेटर उन्होंने मेंशन किया कि वो नहीं चल सकता, IELTS रिक्वायर्ड है, तो इट मीन्स कि वो रिक्वायर्ड है। अब आपका पहला क्वेश्चन कि आप इस्लामिक एजुकेशन से हैं, तो इस्लामिक बीइंग एन स्कॉलर फ्रॉम इस्लामिक एजुकेशन, आप रेड ग्लोब में जो रिलीजियस से रिलेटेड है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैस कम्युनिकेशन का आई हैव नो आइडिया कि उसके अंदर शायद चांसेस थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। एक और टाइप है इसके स्कॉलरशिप कोर्सेज हैं, ये रिलेटेड होते हैं कल्चर से, कल्चरल प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल यूरोपियन कल्चर से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, और इस तरह के प्रोग्राम्स पे भी जो इस्लामियत के लोग और आर्ट्स के लोग वो सिलेक्ट होते हैं। तो आप उसमें भी अपना चांस ले सकते हैं, उनको भी कंसिडर करें। मास कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी के इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर और रिलीजियस और कल्चर से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट तैयबा खातून, you can ask. सर मैंने ना मैनेजमेंट डिग्री में, सर मैं ना सबसे पहले तो